हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबashir ज़ैदी, ज़रार, खुहरो और वुसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज 2 दिन की हंगामा आराई के बाद कौमी असम्बली में जो बजट है उस पर बहस बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गई, जब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर से उस बहस का आगाज़ किया। आपको याद होगा मंडे को जब वो तकरीर कर रहे थे तो अब हुकूमती अरकान ने वही किया जो अब तक अपोजिशन अरकान हुकूमती अरकान के साथ कर रहे थे, यानी उनके सामने जा कर के उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। और कल भी यही हुआ। तो उसके बाद फिर आखिरकार दोनों हुकूमती और अपोजिशन अरकान आपस में बैठे। उन्होंने कहा कि कहीं से शुरू तो करना ही है क्योंकि बहरहाल पास भी कराना है। तो एक आगाज़ हुआ तवील तकरीर से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की, जिसमें जो चीदा बातें उन्होंने कहा ये अवाम दुश्मन बजट है जो हर अपोजिशन कहती है। उन्होंने कहा ये बजट वापस लिया जाए और उन्होंने कहा बिजली और गैस की कीमतें जो हैं वो गुज़िश्ता साल के लेवल पर वापस लाई जाएँ। मज़दूर की कम से कम तनख्वाह 20,000 रुपये की जाए और तेल और घी पर जो टैक्स आयद किया गया है वो वापस लिया जाए और ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफे का भी। तो मतलब बिजनेस एज यूजुअल एटलीस्ट चलो खुशाइंद है कि शुरू हुई बहस, शुरू हुई लेकिन ख़त्म हुई। और अगर मेरे ख्याल शहबाज शरीफ साहब पर हम छोड़ देते तो ये शायद कभी ख़त्म होती ही ना, क्योंकि खबर ये नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, ये तो शायर है कि हम सबको पता है कि उन्होंने क्या कहना था। खबर ये है कि किस तरीके से कहा और कब तक कहते रहे। और ये भी एक बात ज़ेर बहस हो गई थी वहाँ पर कि मेरे ख्याल है कोई 2 घंटे से ज़्यादा तक ये बोलते ही रहे। तो अगर आप सोशल मीडिया भी लोग देख रहे थे और कह रहे थे कि यार मतलब दुनिया तबाह हो जाएगी, क़यामत आ जाएगी, आपकी तकरीर ख़त्म नहीं होगी। चौधरी निसार के दोस्त हैं ना, चौधरी निसार के दोस्त हैं और उनकी भी बड़ी जिम्मेवारी है, मैं मानता हूँ। शहबाज शरीफ ने बिल्कुल ठीक किया। अच्छा, मैं अभी तीसरे सेशन में उन्हें बोलने दिया गया है तो उन्हें 3 घंटे तो बोलना था, 2 सेशन उन्हें नहीं बोलने दिया गया फिर सही। और फिर उनके जहन में था कि जाने अब कब मौका मिले। ये पॉइंट है आपका, गुड पॉइंट। लेकिन हमारे जो दोस्त हैं फवाद चौधरी साहब, वो थोड़े से तप गए। उन्होंने कहा यार ये क्या है, ये तो रुक ही नहीं रहे। 45 मिनट पर कट ऑफ कर देना चाहिए। अच्छा, असेंबली के फ्लोर पर भी एक बड़ी मज़ेदार बहस हुई कि कौमी असेंबली के जो स्पीकर साहब हैं असद कैसर साहब, उन्होंने कहा कि सर आपने तो खुर्शीद शाह साहब का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है लंबी स्पीच देने का। उस पर खुर्शीद शाह साहब बोल गए, उन्होंने कहा कि सर नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी जो स्पीच थी वो 4 घंटे 19 मिनट की थी और अभी ये तो 3 घंटे ही है। अभी तो 3 घंटे तक भी नहीं पहुंचा। अच्छा, शुक्र करना चाहिए फवाद चौधरी साहब को कि वो अमेरिका में सियासतदान नहीं है, क्योंकि अमेरिका में एक सियासी रिवायत है, उसको कहते हैं फिलीबस्टर। अच्छा, फिलीबस्टर क्या होता है? और ये लीगल राइट है कि अगर आप किसी बिल की वोटिंग को रोकना चाहें या डिले करना चाहें, किसी भी सेनेटर के पास हक है कि वो पोडियम पकड़ ले और जितनी भी लंबी स्पीच करनी है किसी भी मौजू पे वो कर सकता है। और अक्सर इसका इस्तेमाल भी होता है। अभी हाल में ही टेड क्रूज, जो आपको याद है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी रहा है, उसने एक 14 घंटे की स्पीच की जिसमें वो नर्सरी राइम्स भी पढ़ने लग गया बीच में, ग्रीन एग्स एंड हैम, डॉक्टर स्यूस का। अगर आपने नहीं पढ़ी तो पढ़ लें, बहुत मज़ेदार है। वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कम से कम अमेरिका के हद तक जो रिकॉर्ड है वो 1957 में एक सेनेटर स्टॉर्म थर्मन ने कायम किया था। 24 घंटे 17 मिनट की स्पीच दी थी, 24 घंटे 17 मिनट, और इजलास चलता रहा। अगर आप सोचते हैं कि यार ऐसे बंदा कैसे कर सकता है, तो बीच में वो खाता वाता भी रहा, उसके जो हैं पीए वीए वो खाना भी लाते रहे। लेकिन सिर्फ खाना की तो बात नहीं होती ना, वो बंदा इंसान है, बाथरूम भी जाना पड़ता है। तो उसके बारे में क्या किया जाए, तो उसकी एक तरकीब सोची। अच्छा, अब इसमें कानून में एक शिक है कि आपको सेनेट के फ्लोर पर मौजूद होना होता है। अच्छा, बाथरूम जो है वो सेनेट का फ्लोर नहीं है। उन्होंने कहा कि यार अगर बाथरूम जाना पड़े तो फिर क्या किया, तो इसके जो पीए हैं उन्होंने बाथरूम के दरवाजे के करीब एक बाल्टी रख दी। तो जब सेनेटर साहब गए और एक ही दफ़ा बाथरूम गए थे बाथरूम की तरफ, तो सिर्फ उन्होंने दरवाज़ा खोला, एक पैर उनका सेनेट के फ्लोर पे ही था, दूसरा पैर बाथरूम में था और वहाँ पर अपना पूरा काम किया है। तो टेक्निकली नॉट आउट। लेकिन अब आप सोचें कि इस खबर 24 घंटे की स्पीच की आपको खबर बनानी पड़े तो आप क्या करेंगे? यार वो तो खैर बनेगी ही मोटी मोटी चीज़ें। लेकिन मसला फवाद चौधरी का ये है कि पीटीआई वालों को तो अटेंशन डिसऑर्डर वो है ही कि वो कंसंट्रेट ही नहीं कर सकते, बड़ी स्पीच हो। ट्रेडिशनली अपोजिशन लीडर्स जो हैं वो इतनी ही बड़ी स्पीचेस करते हैं। आपको
बता दिया, बिकॉज क्योंकि बजट इजलास है ना तो शिकवार होती है सारी चीज़ें, वो दे डोंट सॉर्ट ऑफ यू नो। लेकिन आज तो शिकवार नहीं थी, आज तो वो थी एक्सटेम्पोर थी, उसमें पॉलिटिक्स भी आ गई थी। तो मैं कह रहा अपनी हुकूमत की कारकर्दगी फिलीबस्टर था ना सर। फिलीबस्टर था ना, ये पाकिस्तान, ये देसी फिलीबस्टर। बेसिकली उन्होंने शहबाज शरीफ ने अपना अरमान निकाला कि जाने अब कब जो है वो टाइम मिले। लेकिन ये बजट वो जो कह रहे हैं खान साहब की, तुसी फिक्र ना करो, मैं शुरू करो, बजट तो मंजूर हो ही जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे। देखिए जो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि मौलाना फजल रहमान ने इस बजट को मुस्तरद कर दिया। यकीनन ये सुनकर हुकूमत काम गई होगी। अब मोटी बात यह है कि वो बजट मंजूर करवा लेंगे, बिल्कुल सर, इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, अब एक और मसला भी है। वो क्या है? वो है कि खान साहब को असल मसला बजट नहीं है, असल मसला ये है कि कर्जा जो कि बकौल उनके पिछले 10 साल में 6000 था, 2008 में 6000 अरब रुपए, और अब जो है 30,000 अरब रुपए इतने। आज उमर अयूब भी बड़ी चीख रहे थे कि इतना सूद देना है, ये है वो है। तो इसके लिए जो उन्होंने डेप्ट इंक्वायरी कमीशन बनाया है नैब के डिप्टी चेयरमैन हुसैन असगर की सरबराही में, तो अब मसला ये कि वो ये तो एक तो छानबीन ये करेगा कि कर्जा जो लिया गया क्यों लिया गया और खर्च कहाँ हुआ, कहाँ गया। अगले सेगमेंट में ये मिसाल देना चाहता हूँ कि कर्जा लेना अच्छा क्यों है। चलें सही है। वेलकम बैक। बात ये हो रही थी कि कर्जा लेना अच्छी बात है या बुरी बात है। मेरा टेक ये है कि अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। डिपेंड करता है दुकानदार से लेके मुल्क तक कर्जा किस लिए ले रहे हैं। क्या अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए या सिर्फ ऑफिस के एक्सपेंसेस जो हैं वो निकालने के लिए, नॉन डेवलपमेंट के लिए ले रहे हैं या डेवलपमेंट के लिए ले रहे हैं, और उसका आउटपुट क्या इतना है कि आप कर्जे की किस्त भी निकाल सकें और अपनी रोजी रोटी भी चला सकें। ये बुनियादी फैसले जो उसूल है जो दुकान पे अप्लाई होता है वो मुल्क पे अप्लाई होता है। अच्छा, इस पे हाथ पाँव नहीं फूलने चाहिए। ओ हमारी GDP का 67% जो है वो कर्जा हो गया, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। किसी को कक पता भी नहीं कि इसका मतलब। अच्छा, इसका मतलब क्या? अच्छा, अब जापान नाम तो सुना होगा आपने। जी हाँ, वो इस वक्त दुनिया का सबसे मकरूज मुल्क है। उसकी जो GDP है, एक तो उसकी GDP कितनी होगी, उस GDP का 236% उसने कर्ज ले रखा है उसके ऊपर। माशाअल्लाह, हाँ, मतलब 236 टाइम उसकी GDP हो। अच्छा, उसके बाद आपका अमेरिका 109% जो अमेरिका की GDP है उसके बराबर उसने कर्जा ले रखा है। ठीक है। अच्छा, ये जाहिर है पसमानदा मुल्क तो नहीं है ना। अच्छा, खाते पीते और सबसे ज्यादा मकरूज ममालिक है। सिंगापुर GDP का 108% जो है वो मकरूज है। इसके अलावा बेल्जियम 99% ऑफ द GDP का वो कर्ज है। फ्रांस 96% ऑफ द GDP का वो मकरूज है। चाइना 55% जो उसकी इकोनॉमी है उसके बराबर उसका कर्जा है। और कतर 52% GDP के बराबर कतर मकरूज है। पाकिस्तान का है 67.44% और इस पे इनके हाथ पैर फूल रहे हैं। इंडिया 7% ग्रोथ है, तो उसका भी कर्जा जो है, उसकी जो टोटल GDP है उसका 67% के बराबर जो है वो मकरूज है। अच्छा, एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी है। हाँ, कि वो आसिफ जरदारी साहब की और वो साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गए। मुझे पता है तो 2 और वोट्स बजट के खिलाफ, बजट के खिलाफ या अब मुझे नहीं पता कि बजट के साजिश पका रहे हैं। तो वो जो है इसमें मज़े की बात यह है कि खान साहब ने कल ही एक स्टेटमेंट धुआंधार जारी की थी कि जनाब ये प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना कौन सा कानून है और ये लोग मुजरिम हैं और इनके कोई तो और उन्होंने हिदायत जारी कर दी थी अपने पार्टी को कि कोई प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी करेगा। लेकिन वो तो ऐसा हो नहीं सकता ना, लेकिन वो खान साहब भी क्या जो यू टर्न ना लें यार। अब मतलब नहीं, स्पीकर को बुला के 4 में से 2 के तो प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हो गए ना, शुक्र अदा करना चाहिए। मोहसिन दावड़कर अली वजीर का जारी नहीं हुआ, बाकी 2 के हो गए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि फिर आपको इतनी लंबी लंबी फड़े नहीं मारनी चाहिए ना, बढ़के नहीं मारनी चाहिए कि जनाब ये। अच्छा, अब मैं तस्करा करना चाह रहा हूँ कि खान साहब जो हैं वो इदारा साजी भी कर रहे हैं, सिर्फ यू टर्न नहीं ले रहे हैं, अच्छे इदारे भी बना रहे हैं। मसलन उन्होंने हाल ही में एक तो ये डेट इंक्वायरी कमीशन बनाया है जो बताएगा कि इतना कर्जा क्यों ले लिया और कहाँ हुआ। इससे अहम खबर ये है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, कौमी तरक्याती काउंसिल जो है वो बनाई गई है। इस मुल्क में इक़्तिसादी राब्ता काउंसिल जो आइन का इदारा है ECC,
वो काफ़ी नहीं था, ज़ाहिर है प्लानिंग के लिए, माशी प्लानिंग के लिए। मुश्तरका मफाद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है वो भी काफ़ी नहीं थी। कौमी मालियाती कमीशन जो है वो भी ये काम नहीं कर सकता था। उन्ना दे उत्ते अब है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसके वज़ीर आज़म सरबराह होंगे और वज़ीर ख़ज़ाना, मुशीर ख़ज़ाना, वज़ीर ख़ारजा, मनसूबा बंदी, मुशीर तिजारत, चारों वज़रा आला और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा जो हैं वो भी इसके मेंबर होंगे और वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के भी बहसीत चीफ मेंबर हैं, ऑलरेडी हैं। काउंसिल और कमेटी में फ़र्क क्या होता है? दो भूल गए आप। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है और उसके बाद इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट, तो वो जो है वो कौमी इक्तिसादी काउंसिल के अलावा है। और पता नहीं क्या कमेटी, काउंसिल और कमीशन में फ़र्क क्या होता है, मुझे समझा सकते हैं यार? अब मतलब एक तो है कि देखो COUNCIL। अच्छा, ये खबर इतनी गैर अहम थी, 2 अल्फ़ाबेट्स का फ़र्क है, इतनी गैर अहम थी कि किसी ने इस पर गुफ्तगू नहीं की। इतनी गैर अहम थी कि आज शहबाज शरीफ ने 3 घंटे तकरीर की, लेकिन उन्होंने कहा यार इतनी काउंसिलें मौजूद हैं, ये नई जो है आखिर क्यों बनाई जा रही है। घंटा चाहिए सिवाय एहसन इकबाल के ट्वीट के कोई रिएक्शन नहीं आया है। और एहसन इकबाल साहब ने क्या ट्वीट किया कि क्या ये जो कौमी तरक्याती काउंसिल है ये कौमी माशी काउंसिल की जगह लेगी जो कि एक आइनी इदारा है? क्या फ़ौज बाज़ाब्ता तौर पे माशी इंतज़ाम या नाकामियों का क्रेडिट भी लेगी? उन्होंने एक सवाल उठाया है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा है कि मुझे कुछ रिजर्वेशंस हैं, ऐसा लग रहा है कि हुकूमत फ़ौज को तनाज़ात की तरफ धकेल रही है। ये एहसन इकबाल का ट्वीट है, ये एक रिएक्शन आया है। मैं तो चाहता हूँ कि यार और आप कोई काउंसिल ना बनाए, एक एंटी भंड का। और ये भी है कि नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों के साथ साथ कि आप माशी सरहदों की हिफाजत भी। हाँ, मुझे सिर्फ एक इसमें जो पॉजिटिव पॉइंट लग रहा है कि फ़ौज अगर अब मईशत में स्टेक होल्डर बन रही है ऑफिशियली आ करके, तो आगे जा करके नो नॉनसेंस होगा। नहीं, नो नॉनसेंस नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ जो भी आगे होगा तो फौज को फिर उसका क्रेडिट या डिस्क्रेडिट भी लेना पड़ेगा। पहले तो आप फेंक देते ना सारे, यही तो एहसन इकबाल कह रहे हैं। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ। तो एक तरह से अच्छी बात भी है कि आपने फॉर्मली उनको एक रोल दे दिया है, ठीक है ना, ताकि आ जाए ना। अच्छी बात है भी, अच्छी बात नहीं भी है, दिस इज डिबेटेबल। हाँ, यार काउंसिल पे काउंसिल बनाते जाए। चलिए, कोई बात। आउटपुट क्या है? तुम कितनी काउंसिल बनाओगे? हर घर से काउंसिल निकलेगी। एक ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। अगर आप 21वीं सदी के जो लीडिंग दानिशवरों के नाम गिनने लगे तो यकीनन रज़ा असलान का नाम उस फहरिस्त में शामिल होगा। आप एक दानिशवर होने के साथ साथ एक मुसन्निफ़ भी हैं, टीवी एंकर भी रहे हैं, प्रोड्यूसर भी रहे हैं और एक लीडिंग फ़िलासफ़र भी हैं। बहुत किताबें लिखी हैं रज़ा असलान साहब ने, तारीख़ के ऊपर, मज़हब के ऊपर और मज़हब की तारीख़ के बारे में भी, जैसे कि नो गॉड बट गॉड जो इस्लाम के बारे में है, गॉड अ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ रिलीजन, और ज़ीलट जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो जब मुझे पता लगा कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं और कराची की हबीब यूनिवर्सिटी के योसिन लेक्चर्स में शिरकत कर रहे हैं और वहाँ पर उनका बहुत एक अच्छा सेशन हुआ स्टूडेंट्स के साथ भी और अटेंडीज़ के साथ, तो मैंने कहा यार ये मौका तो हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो मैं गया हबीब यूनिवर्सिटी और मुझे मौका मिला, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से कि रज़ा असलान साहब के साथ मैं कुछ बातें करूँ, और वक्त कम है तो आपको दिखाई देते हैं मैं क्या गुफ्तगू। Let's start with the way the world looks today, right? We look around, we see this tide of sort of right-wing authoritarianism, and usually it's in the garb of some kind of rather secular nationalism or religious nationalism. I mean, we see white supremacist ideologies on the rise in America and in the West. In the Muslim world, we've seen terrorist organizations wreak havoc. Even in next door in India, we see a right-wing Hindu nationalism, Hindutva for lack of a better term, taking hold. And even in Buddhist countries, we see very similar radical ideologies on the rise. You've written on this several times. In 2009, in fact, your book sort of highlighted this, sort of saw it coming. Do you think that this is a passing phase or just the first act of a new world order? That's a very good question. I do believe that it is a reactionary phenomenon. I truly do. I think what's happened is that
the globalization has created essentially a global identity crisis. I mean, it is becoming more and more difficult for people around the world to say with confidence what exactly it means to be part of a nation state that is, thanks to all these global actions that are taking place, becoming less and less relevant, right? It's very hard, I think, for people to say what it means to be American, or what it means to be Indian, or what it means to be Israeli, in the light of the fact that these populations are becoming more diverse, more eclectic. Mass migration is changing the very racial landscape of a lot of these countries. And so I think for many, many years, people like myself, were celebrating globalization and saying that, oh, it's going to create a new world order. It'll disintegrate. Surprise. Well, it isn't. You're absolutely right. Of course, what you're going to get is a backlash to that. Of course, there are going to be populations who are going to look around and no longer recognize their communities. And of course, those people are going to long for some kind of imaginary past, right? Make America great again, right? So I think there's two things that are very important, and you touched on them brilliantly. Number one, it's a global phenomenon. It's happening everywhere. And number two, that it is unquestionably linked to this sense of feeling unmoored, right? Feeling as though it's no longer possible to say with any ease or comfort who you are as an individual or as a collective. But I think that we need to all recognize that there is no stopping globalization. True. There is no reversing this There's no going phenomenon. back. There's no going back. It's happening. You can try to stem the free flow of migration. It's not going to work. You can try to curtail new communication technologies. It's not going to work. So the answer to your question is, this is a temporary phenomenon. It's a dangerous phenomenon. It has the potential to be truly catastrophic. And it already has resulted in a terrible situation in the United States, in India, in Turkey, in China, in Myanmar, in Israel. But I think that if you pull back and look at the long lens of history, if you will, you'll see this as a temporary blip, a sometimes violent reaction to what is the inevitable progress of global society. How long do you think is temporary in historical terms? I mean, a decade, a century? Is it going to get worse before it gets better? I think it is going to get worse before it gets better, and I think that the reason for that has to do primarily with a couple of factors. Number one, with what has been an unexpected rise of white nationalist authoritarianism in the United States. I think for much of the world, the belief was, well, this may be something that you're dealing with in France. It may be something that you're dealing with in Britain. It may be something that you're dealing with in India. But America certainly is not going to, suddenly stop being this diverse nation and start, becoming a white nationalist state. Listen, I was as surprised as anybody else was. I was talking to a friend of mine from Pakistan, actually, who had said that there was almost a global sense of mourning when Trump was elected, because for a lot of people they thought, but not America. So I think that's quite dangerous, and it remains to be seen whether this megalomaniac is going to get another 2 years or another 6 years. I don't think that we can survive another 6 years. I don't think it'll be much harder to reverse course after 6 years. But I think at the same time, because we're seeing the enormous financial success of authoritarian countries like China, now in some parts of the world, in Turkey, in India,
suddenly there's an alternative model. Yeah, for like, hey, it seems to success. work. It seems to work. Democracy is a mess, but this kind of top-down control of a state seems to be functioning better. Now, again, I do think that this is a short-term phenomenon, but that conception, that idea, has the potential to make this last longer and to be even more devastating than it actually needs to be. Okay, now let's come closer to home. And by home, I mean we're sitting here in Pakistan, which is very much part of the Muslim world. Now, when you wrote No God But God, right, in the prologue you wrote that, well, you know, either I'm going to be called, some people are going to call me an apostate, some people are going to call me an apologist. How did that work out? What did you end up being called mostly? Pretty much exactly as I thought it was going to work, yes. Okay. Look, when you write about religion for a living, you're going to get in trouble. And I think it has partly to do with what we were just talking about, because people are under the mistaken impression that religion is about beliefs and practices. And of course, beliefs and practices are important when you're talking about religion, but that's not what religion is. Religion is first and foremost a matter of identity. It's always been that way. When someone says, I am a Jew, I am a Muslim, I am a Christian, I am a Hindu, I am a Buddhist, they're not making a faith statement so much as making an identity statement. They're talking about who they are as human beings, how they understand their role in an indeterminate world. So, if that's what's at stake, then you can understand why when someone like me shows up and tries to present a counter-narrative or tries to re-examine, you know, religious history through a different light, present a different perspective on it, people feel not so much that their beliefs are under attack, but that their very identity is under attack. And the response, yes, violently. Violently. Yeah. They respond violently to that. I understand that. I recognize it, I sympathize with it. So I've had a little bit more luck, let's just say, in reaching a broader audience, an audience that encompasses both sides, both the very religious and the very anti-religious, for two reasons. Number one, because I take belief seriously. I take religion seriously. I am not here to denigrate what people believe. But on the other hand, I also insist that all arguments be based on reason and logic and fact and truth and history. How do you reconcile those two? Well, it's interesting because I get asked this question. Yeah. I've been asked this question a lot just since I've been here in Karachi. It's a central debate here. Yes. Yeah. Well, I think the issue is that you speak with integrity and honesty, but you do not hesitate to speak the truth. And sometimes it gets me in trouble. I've suffered the consequences both personally and professionally as a result of that. Yes, yeah, I know. Yes, right. Of course. But at the same time, I think that people recognize authenticity, and that's what they're looking for. I think people are looking for someone who is truly speaking about what they believe, and whether they accept that or not, at the very least, that sense of authenticity blunts the criticism that I receive. People are looking for something real in a largely artificial world. You wrote about the sort of the evolution and the future, or the possible future of Islam in No God But God. Now, when we look at the Muslim world now, and again, I'm going to go back to what you said about an imagined past, right? We always talk about the glories of the past, and I mean, whenever we talk about Muslim science, we have to go like 1,000 years back, right? If not more, you know, and it's like Biruni and, you know, so on, and so, Ibn Sina and so on and so forth. Did that golden age ever really exist in real terms? And secondly, and I know that this is tricky, looking forward, predicting or speculating as to the future is tricky. Where do you see the Muslim world, if we can use a term like that, going?
First of all, no, there was never any time that was the golden age that suddenly stopped. Yes, societies rise and fall. There are internal and external factors that always play a role in the progress or the retardation of societies. That's always been the case. It's not endemic to Islam. All societies function in these ways. Yes, there was a time in which the Muslim civilization was ascendant and Christian civilization was descendant, and there's now a time in which those two things have shifted. I don't think that that says anything about the quality of either civilization at all. But I will say this, that I think that this sense of an imagined past, again, goes back to what we've been discussing this whole time, which is a time in which it was easy to identify myself, a time in which I could say what my collective was. Hence, in Islam, this kind of thirst for the ummah, right? It's what the whole idea of the caliphate is about, right? This sort of desire to recreate this time in which we all belonged to a single body. That time never existed. Not as such, no. Never existed. Certainly from the moment of the death of the Prophet, there was never a time in which we all were one community. Super state. Never existed. But nevertheless, that desire, I think, opens a window into our longing and how we think about it. That is intimately linked to, I think, what the future of Islam is going to look like, because, and I know that this might, depress certain people who long for that sense of easy community, but what you are seeing is a more fractured Muslim community. What you are seeing is what I like to call micro-ummahs, right? No longer an idea that we should all come together and be one body, but instead, okay, you have your body and I have my body. I have my community. And this is, again, we were talking about new communication technologies. That's precisely what the digital space has done. I mean, think about this. From the dawn of human history until about 20 years ago, the definition of community was solely about geography. Community meant the people around you. That's what that meant. Whether that meant the people in your cave, or whether it meant the people in your hut, or whether it meant the people in your village, or the people in your city, or the people in your state, or the people in your country. Right. The definition of community was geographically located for all of human history. And what social media, what the digital space has done, is changed completely. Yeah, I may have more in common with somebody who lives in Jakarta because we share the same dreams, the same values, maybe we even share the same taste in music, than either of us have in common with our actual communities. And it's too early to really say with any confidence how that is going to transform human societies. If I no longer need the people near me to help me define myself, I don't know what that's going to look like. But what it will, I think, indicate is an even greater fracturing of this body. That scares people. I understand that it scares people. It doesn't have to. In a way, it does, though. Because, I mean, again, if we look at it, and again, right, we don't know how this is all going to unfold. But this sort of, the double-edged sword that is social media, it's the kind of phenomenon that, say, led to teenagers in Birmingham, right, going to fight for Daesh in Syria. It led to, say, the Christchurch Christchurch attacker, sitting there, being radicalized, having more in common with right-wing nationalists in the US or in Europe. We are seeing this kind of thing. But you see, what worries me is that I don't see a counter-narrative to that really developing. I mean, it seems that the extremists are able to market themselves much, much more effectively than what we would call, say, the moderates or the progressives, for lack of a better term. Is that because they have a better message? Well, I would go one step further and say that in many cases, what we now refer to as extremism, extremist ideology,
has almost wholly migrated to the digital space. When you talk to, for instance, counterterrorism experts or counter-extremism experts, a decade ago, those people had to go in the field, right? And now they just exactly. Now they're just online, just monitoring what's happening, because that is the safe space for these extremist ideologies. And you're absolutely right that that is something that is enormously disconcerting. I guess what I would say is that in many ways, this is sort of who we are as human beings. We are people who strive for collective identity. And yes, social media has provided a tool that allows for that collective identity to be formed more easily and more clearly based on you know, what we refer to as post-materialist values, right? Values that have nothing to do with safety or shelter or sustenance, but instead have to do with how you see the world, how you understand, you know, your place in it, those kinds of things. And by no means am I discounting the threat. As a matter of fact, a report just came out in the United States that says that white nationalism now is a larger presence online than ISIS is. And a less policed presence. Less policed. It grew at about 600% in the last since 2012. It's grown 600% online, and that is a trend that should worry everyone. But again, it's not about it's a better message than the moderate message or what have you. It's simply a fact that it is much easier to create that sense of identity that we've been talking about all along when you focus it on these primal identity markers: race, religion, ethnicity, gender. That's easy. You know, it's very simple to say who is us and who is them. Are you a man or a woman? You're a woman? Well, then you're not us. Are you black or are you white? You're black? Well, then you're not us. Are you Christian or are you Muslim? You're Christian? Well, then you're not us. It's simple. It's about as simple as identity gets. Whereas those of us who preach moderation or progress, we say, oh, well, you know, we should identify ourselves based on common values. And, well, what are those values? Well, you know, they're everywhere. I mean, come on. Right. It is the correct way of being human in the modern world, but when faced with an identity crisis, and one group is saying, it's easy, what's your skin color? You're done, that's it. And the other group is saying, it's these ethereal moral principles that bind us together as human beings. I've already stopped listening. It doesn't make it stronger. It doesn't make it last longer. It just makes it easier. अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।